towards the critical analysis of the short story. So the असल में critical analysis में कभी भी headings नहीं होती, but just for your understanding और याद करने के लिए मैंने headings डाली हैं कि आप लोगों से points ना भूल जाए. So societal commentary है, वही सारे जो themes थे वो इधर हम लोग रख रहे हैं. Hope and resistance, universal theme, societal commentary. So Gordemir uses the story as a powerful critique of apartheid, highlighting the racial tensions, inequality, and suffering is inflicted. The author's silence can be seen as a reflection of the forced silence and powerlessness experienced by many under oppressed regimes. तो ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा इनसाइट्स देती है अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में, जो कि हाईलाइट करते हैं रेशियल टेंशन्स, किस तरह के कलर के ऊपर लोग जज करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी होती है या रेशियल इनइक्वालिटी होती है, और सफरिंग जो है कनेक्टेड होती है इंडिविजुअल्स के साथ. तो ये नरेटर जो साइलेंस है थ्रू आउट दिस शॉर्ट स्टोरी, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह एक अपर अथॉरिटी फोर्स करती है साइलेंस, और जब ऐसे लोगों के पास पावर नहीं हो तो ये पावरलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं. एंड ये सारी चीज़ें अंडर द ऑप्रेस्ड रिजीम्स में होती हैं. So the next we have is the universal themes. While grounding in a specific historical context, the story explores universal themes like loss, grief, memory, and the importance of remembering the past. Now what happens is हमारे पास कुछ यूनिवर्सल थीम्स हैं, जैसे कि लॉस है, लॉस ऑफ अ पर्सन भी हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, लॉस ऑफ पावर भी हो सकता है. यू कैन टेक दिस द वर्ड लॉस इन अ वेरी यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट. ग्रीफ, हाँ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी नहीं होते, रिलेटिव्स भी नहीं होते, वी ग्रीव फॉर देम. And if we do not have power in our hands, we cannot live our life according to our rules and regulations. तो उसमें भी grief बनता है. Then we have memory and the importance of remembering the past. किस तरह हमारी memory में सब कुछ stored होता है, but still we hope for the better in the future. So the watcher struggles to cope with his loss, resonates with anyone who have experienced similar pain. होप एंड रेजिस्टेंस में जब हम लोग एक कोर्ट में कोटेशन में हम लोग नाइट को डिस्कस कर रहे थे या स्काई को डिस्कस कर रहे थे, आसमान को, अंधेरे में स्टार्स को डिस्कस कर रहे थे, तो वो किस तरह एक सेंस ऑफ होप हमें देता है. सो थ्रू आउट द स्टोरी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं कि अपार्थाइड है और ऑप्रेसिव रिजीम्स हैं एंड देयर्स द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन या डिविजन, still we will always hope for the best, for the better future. Now we have the literary techniques that the author has used. So Gordemir masterfully employs minimalist prose and evocative imagery to convey complex emotions and social commentary. अब इस जो हमारे पास ऑथर हैं, साउथ अफ्रीकन ऑथर, इसने एक लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ किए हैं क्योंकि प्रोज में वो बहुत ज़्यादा मीनिंग और डेप्थ ऐड करता है, कॉम्प्लेक्स इमोशंस ऐड किए हैं बाय कैरेक्टर्स. So the sparse dialogue and introspective narrative creates a sense of intimacy and emotional depth. Emotional stance bhi hai idhar. Then we have limitations. Some may argue that the focus on the internal struggle of the individual protagonist could overshadow the broader context of the apartheid systematic injustices. तो इसमें ये बता रहे हैं कि अब रीडर्स जो हैं वो यही सोचेंगे कि ओके वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोटैगनिस्ट एंड व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शी फेसेस. बट ये इस पे भी बात हो सकती है कि किस तरह कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपार्थाइड को डिस्कस किया है, कितने इनजस्टिसेस हैं, एंड एडिशनली द अनएंडिंग एम्बिग्विटी. So overall, a white teenager grapples with her identity and confronting racial boundaries. A Watcher of the Dead is a powerful and thought-provoking story that uses personal tragedy to illuminate
the wide social and political realities of apartheid साउथ अफ्रीका। तो इसमें ओवरऑल एक टीनेजर है जो कि शी टॉक्स अबाउट हाउ द रेशियल बाउंड्रीज आर सेट एंड इन दिस द करंट सोसाइटी शी लिव्स इन, और किस तरह ये पर्सनल ट्रेजेडी के साथ इंटरट्वाइंड है। So the themes are specific to its context, and the story resonates with the readers beyond its historical setting due to its exploration of universal human experiences and the enduring power of hope resistance in the face of injustices। तो किस तरह ये स्टोरी जो है रीडर्स के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या सेटिंग इसमें यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के थीम्स डिस्कस किए हैं, जैसे होप है, पावर है, रेजिस्टेंस है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है। सो रीडर्स कैन कनेक्ट टू इट। लेट्स टॉक अबाउट द सिंबलिज्म, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी लिटरेरी पीस। तो सिंबलिज्म हमें हमारे पास जो है वो एक लिटिल ग्रेव है, देन वी हैव स्टार्स, द इंसेंस, द वॉचर्स साइलेंस एंड द वुमेन वार्निंग। So the first one is the little grave. It represents the loss of innocent hope and the future under apartheid. It also symbolizes the countless forgotten victims of oppression. तो graves हमेशा ये चीज़ explain या it talks about कि किस तरह एक इंसान, because it is taken as a symbol, so you can connect it with the thing of how you are you have lost a thing, a hope, a innocent human, and the future. The stars offer a glimpse of something beyond the immediate struggle, hitting at hope and the possibility of change। तो स्टार जो है समथिंग, जब हम स्काई पे स्टार्स को देखते हैं तो दोज आर नॉट रीचेबल, हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये इट टॉक्स अबाउट द इमीडिएट स्ट्रगल्स और हिंटिंग एट होप के ओके वन डे हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे एंड देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एंड समथिंग गुड विल हैपन। Then we have incense. Now it represents tradition, cultural heritage, and a form of personal solace in the face of grief and injustice. So हमारे जो cultures हैं हम उनको follow करते हैं so that we are more connected and more rooted in our culture. Watcher's silence symbolizes his personal pain and the collective silence imposed by fear and oppression। तो हमारे ऊपर जब भी कोई जालिम रूल कर रहा होता है तो हम हमेशा ऑप्रेस्ड होते हैं, fearful होते हैं, we have the pain in our hearts, and now and then it is the collective fear or silence of a community। Then we have the women warning, represents the constant threat and vulnerability faced by black individuals under apartheid। तो ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज़ अ कांस्टेंट थ्रेट, वी आर नेवर हैप्पी, एंड वल्नरेबिलिटी मीन्स व्हेन यू आर वल्नरेबल टुवर्ड्स समथिंग, व्हेन यू गेट अफेक्टेड टू सर्टन circumstances faced by any community, but here it is shown the black individuals under apartheid। एक ऐसी movement जिस पे आप लोग उसके एक चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हो, and that is known as the apartheid movement, and then you are vulnerable towards the situation। Talking about the literary devices or the figurative devices we have in the short story is, one is the symbolism, then we have the irony and the foreshadowing। सिम्बलिज्म का ये मतलब है कि एक ऐसी चीज़ों को सिंबल बना के आगे फोर फ्रंट पे स्टोरी को कवर करना। इधर सिम्बलिज्म ये है कि फ्यूनरल्स रिप्रेजेंट मोर देन अ डेथ। They symbolize the social injustices and suffering of the black community under this movement, apartheid। So Miriam's head wrap embodies resilience and cultural identity। तो सिंपलिज्म ये है, ये लोग बात कर रहे हैं कि डेथ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देता या इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में मीनिंग नहीं देता जितना फ्यूनरल देता है। सो दे सिंबलाइज्ड फ्यूनरल फॉर द इनजस्टिसेस एंड सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी। सही है। उसके बाद आयरनी है। आयरनी का मतलब ये है कि डिस्कशन एक चीज़ पे हो रही हो और बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ परसीव की गई हो।
So Clara's initial morbid curiosity develops into genuine empathy, now challenging her own preconceived notions. Now there are two words, sympathy and empathy. Sympathy is जब आप किसी के दूसरे के कहें कि ओके कंसोल करें ये सब. Empathy is when you stand in the shoes of the other person and feel the same problem for yourself as well. So then we have foreshadowing. Hence are the dangers and limitations of transgressing racial boundaries. Foreshadowing का मतलब यह है कि जब एक कैरेक्टर है उसको फ्लैशबैक्स और फ्लैश फॉरवर्ड्स आ रहे हों और स्टोरी हमें कुछ आगे ग्लिम्सेस नज़र आए हों तो वो फोरशैडोइंग होता है. तो hence are the dangers and limitations of transgressing racial boundaries. तो इसको foreshadowing ये हो रही होती है कि what if in the future the things get worst for a racial